Yes, sure. Yeah, okay. A very warm good morning to you all. Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it. With this inspirational quote given by Bruce Lee, I, Jyoti Kumari, welcome you all on the fourth workshop of this personality development program organized by Training and Placement Cell, Army Institute of Education, Greater Noida. The knowledge of counseling skill is essential for teachers to promote student learning and well-being. Teachers can play a key role in resolving student issues and concerns as they spend more time with students than any other professional in the school. So, to sharpen our counseling skill today, we have with us Dr. Pratibha Anand Singh to share her profound knowledge on the topic Teachers as Counselor. Dr. Pratibha Anand Singh is the director and consultant clinical psychologist at Kasturba Institute of Psychology and Behavioral Medicine, Greater Noida. She is an RCI registered clinical psychologist who had been practicing in Delhi and NCR region for the last 16 years. She is the consultant psychologist for the reputed central government project called Kiran to provide telecounseling services for the disabled as well as general population to cater the mental need caused due to COVID-19. Dr. Pratibha has done her MPhil in clinical psychology from Institute of Human Behavior and Elite Sciences, Delhi, and holds PhD in psychology. She has also qualified UGC NET exam and was also awarded a doctoral fellowship from NCERT, Delhi, for her doctoral work. She has worked at the faculty position in psychology departments at various government as well as private universities. She has also worked in many reputed hospitals and clinical settings around Delhi and NCR region. It's our honor to have you on board, ma'am. Now I request Dr. Jyoti Tiwari, Assistant Professor, Army Institute of Education, Greater Noida, to welcome our guest of the day. Over to you, ma'am. Uh, Ma'am, actually, Jyoti ma'am is having some trouble, so can we proceed if that's not an issue? Okay, now I request Pratibha Anand ma'am to start with the session. Over to you, ma'am. Ma'am, please unmute, ma'am. You are on mute. Okay. Yes, ma'am. Thank you, dear students. Thank you, Jyotiman, for inviting me. AI is second home for me by now, since I've been often coming here, visiting, meeting students, and delivering lectures. So it's always wonderful to come here and interact with the students. Uh, since we are already delayed, we'll just straight away come to the topic. That's teachers as counselors, which is a very interesting topic, which I personally think would be of relevance to you all as the budding teachers for tomorrow. And I would expect that students would come up with queries and questions even in between also. I'm open to talk and I'm open to, discuss and interact during the deliberation. So need not be a one-sided passive lecture. Or uh, you guys are open and free to interact in between also and come up with queries as and when it strikes your mind. Thank you. So I'll share my screen now. Yes, ma'am. Share screen. On the top right side, you can see a upward arrow. Ma'am, the up.
Okay, students, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Yes. Okay, should I put it on the slideshow? Yes, ma'am. Yes. You're able to see? So please keep talking so that I know that we Yes, are connected in ma'am. case if there's any kind of technical glitch. And then I would discover sooner if you are able to talk to me and if you're still interacting. Right? Okay. So now we all know and we all understand that educational system is something very important, very pivotal to the development of any every nation, and students at school are growing into becoming independent individuals. So that's the place, basically, this educational institutions. The higher education institutions are of course there, that provide a an upsurge to the growth and to the development of an individual, which that facilitates the individual into becoming a particular kind of a professional, a more productive, useful member of the society in terms of what one is going to deliver more categorically in terms of his or her occupation. But during the growing up years, when a child is actually going to school, he or she is actually developing with regard to various domains, and different aspects of one's personality are uh, going through changes and rapid development. So during developmental years, the growth is actually multifold, and it is also very fast paced. It's very, very rapid pace. You would see that there are biological and physical changes taking place. There are cognitive, that is intellectual changes taking place, and there are also emotional and social development, which is also taking place at the same time. You would find it very interesting to note that when a new infant is born, as we were discussing it the other day as well, the growth and development of intellectual functions and even the other physiological and bodily changes, physical development, is so rapid that within a week or 2 weeks, we see some remarkable changes. And if those changes are not met, we can always say that the development is not taking place. It's very strikingly at a high rate during the first 3 months immediately after birth. And later on, as the child keeps on growing, the rate and the pace of development may not be as high because of, but nonetheless, till 18 years of age, particularly during till 13, 14, the entire development and growth is taking place at a very rapid pace. And it's certainly taking place at all the levels: physical, physiological, biological, cognitive, emotional, as well as social. Now, schools are institutions that are witnessing this kind of the process of growing up of a child, of an individual, during the entire developmental phase. That is from 3 to 17 years of age. We would say almost around 3, we start sending children to school, and that may be a play school, but that nonetheless, all these schools witness the entire process of growing up. And we say that the schools or the institutions, or so to say the teachers, are the people who are equally accountable as parents in society for the development of an individual, of a child as an individual. So what a person, a child turns out to be eventually as an adult, teachers also, so to say, have an equal amount of role and accountability as parents in the society. Now, as the child starts going to school, he or she encounters what? Would you think? Can you just think what is it that the child encounters when he or she goes to school? Are you able to think of something? Students, are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So as a small child, let's say we are thinking of a 5-year-old who's just started going to a big school. What is it that he or she is going to experience? There may be a small play A school nearby. social Sorry, yes, social yes. interaction. Social interaction. Okay, great. What else? Ma'am, maybe formal settings. Formal settings. Wonderful. Yes. Because prior to that, the child has People. always been in a close personal niche. You have your family around, you have your parents, your siblings, neighbors, known tools, close relatives, or even if you go to a play school, the child is likely to come across a few small group of children
with whom they would be largely playing and jumping around, going through slides and all. So it's a very one to one personal small group relationships. Now it's the first encounter with a larger world, the bigger picture. What else? What else would you suggest? और कुछ आ रहा है और माइंड में? Okay, Textbook just knowledge. sorry. Textbook knowledge. Ma'am, Yes, yes, textbook knowledge. of course. Textbooks, Ma'am, more learning. Right. competition. More competition, of course. Wonderful. So, yes, you're there. So, but if we actually start thinking from the perspective of a small little child who's just entered a new, huge, tall building and he's expected to be all by himself, the mother has to go waving bye bye to the child. The father would be leaving, no siblings around probably, and he is all by himself, a small little child who's often fed by the mother or the aunt or the maid servant who's there to take care. And, even susu, potty, everything they go about telling to their mothers. And now they're expected to take care of themselves, their belongings, their books, their stationery. These days we see the system is slightly different, and it's all kept in the cupboards inside in the school itself for small children. But then still, nonetheless, they have a small bag that's carrying a small amount of stuff, a water bottle, lunch box, maybe colors or a few other things that is expected to take care of themselves and the new environment. So this is what the striking new experience comes to the child. Separation. Separation from the parents, the people they're familiar with. So they are now expected to be away from the parents for few long hours, 6 to 7 hours. They are to stay away from their parents, their family, all by themselves. So children experience separation anxiety, neglect, because it's a huge group. There's going to be a group of, let's say, 30 children at least. And so, in that sense, in a given classroom, a teacher may not be providing that one to one individual attention to every child. And they will have their first encounter of being lost in a group, the feeling of being lost. Nobody is taking care of me or nobody is attending to me. The child is asked and made an apple um, on the board, and it's expected that all children copy it and color it, and this child is not able to trace where a particular color is, or all other children are using the red colors, he's not getting his red color. There's nobody to tell him out. There may be a shy child sitting right at the corner. There may be a very vivacious and very dominant kind of a child who may be taking it all, who's grabbing all their attention, and there may be a child who's feeling completely lost and probably neglected. There may be suddenly this huge feeling of loneliness that creeps in, because even amidst so many people around, you are alone in terms of the people that is there is more like a crowd to you, because you do not know them, you do not relate to them as a beginner in the school. Most people around are strangers. So that's your first encounter of being in strangers for so long, away from your own family. And that's not very comforting. It's a difficult feeling to be among strangers, and so many strangers in a particular situation where your parents themselves have actually left you out there to be with a set of strangers, and you've never been like that. All people around are not known to you, and you're just sitting there. There may be failure and rejection. Failure and rejection in the sense that a teacher may be asking to perform certain tasks, say, recite a poem, make a drawing, write an alphabet or a number, and despite knowing you are not able to do it because you are still grappling with the anxiety of separation, being among strangers, little bit of loneliness, being evaluated, and still exploring the walls of the room and the drawings and the colors around the furniture, the teacher, the face of the teacher, and the ambience. And this is the child's first encounter with competition and multiple instructions. At home, you get just one instruction at a time, or at the most two instructions. In the classroom, you get an instruction: keep your bag, go to the classroom, keep your bag, uh, come for the join the assembly, take out, keep your maths notebook inside, take out your English notebook, start opening the page number 2 or 3. These are a set of multiple instructions. A small child is never able to handle it all at the same time. But the flip side is also there. They start getting to have friends and peers. That is their first encounter with the peer group. So many children of their own age. We all are together and we are trying to
learn something, do something. They indulge in new play. Prior to that, the play was not very organized. But the child may be lonely inside home, playing, uh, maybe basically indulging in self-initiated play. But now, for the first time, the child is getting into more of cooperative playing. Playing with other children, having playing rule-based games, little bit, or maybe cooperating, cooperating in certain kinds of playful exercises with other children. They learn to share, sharing a pencil, sharing a color, sharing food, sharing their lunch boxes, snacks, chips. This all starts for the first time, and which is all fun for them. They're also learning new skills. Maybe writing a new alphabet is fun for them, or doing new activities. That's so stimulating, mentally stimulating. So it's boring when the child looks back. So for some children, it's certainly boring when they look back that they were all by themselves at home. So it's so good and nice that now they're coming, although they are grappling with the anxiety of being among so many other people, new people, strangers, and all, but still they feel that it's all fun. So after a few days, they start getting comfortable with it. And they start also enjoying activities, new activities like learning to dance, sing, perform rhymes, coloring, and every sort of lot of new stuff that they get to do at this new place. Now, as the child grows, he or she encounters what? Can you guess? Suppose, say, the child has now eventually reached class 4, 5, 6, 7. What is he encountering? 8, 9, 10. What is he encountering? Are you guys there with me? Are you able to hear me, students? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सो अभी बताओ, और क्या होता होगा जब हम क्लासेस और बड़ा होता है बच्चा और बड़े क्लासेस में जाता है, तब वो क्या एनकाउंटर करता होगा? That's about a small child we were talking about. Now I'm just asking, what a child who's relatively little more grown now, going to little more senior classes, middle school, or maybe the senior section, what is he or she grappling with? More Ma'am, they competition. now have, yes, ma'am. They now, yes, ma'am, more competition, and also like they have now textbook in more written material than the drawing materials. And earlier they have drawing materials, and also the way they sit. Like earlier they used to sit in a rounded table, but now they have to sit in a table that is rectangular. Okay, Ma'am, great. So neglect. structurally, so emotional, हाँ बोलिए बोलिए. Ma'am, neglect, bullying. Yes, yes, absolutely. So, yes, so now as they Yes, grow, ma'am. eventually, if we talk about psychological aspects. So, my dear friend, beta, what's your name? The two students who spoke? अपना नाम बताइए जरा. Ma'am, And Pushpa, ma'am, Pushpa, and पुष्पा. Shubham. Shubham, acha. So Pushpa was saying, was talking basically about the structural changes in an educational setup, right? But if you talk about psychological aspects, emotional and psychological aspects, तो उस level पे हम देखेंगे कि the child has started experiencing more competition. Now Yes, things are ma'am. more demanding and draining routine. पहले 1 डेढ़ बजे स्कूल खत्म हो जाता था, क्लासेस अब 3 बजे खत्म हो रही हैं, राइट, या 2 बजे खत्म हो रही है, राइट. सो टाइम हैज एक्सटेंडेड. मे बी द पीरियड ड्यूरेशन हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड नाउ. पहले 30 मिनट्स 35 मिनट्स का क्लास होता था, 40 मिनट्स का है या 45 मिनट्स का है, मे बी प्रोलॉन्ग. Double classes together may happen for the same period, which may become a little boring for children who are growing up. But nonetheless, the topics are so vast that sometimes it's really required. And then of course, there are more multiple instructions. बहुत कुछ है, bombardment of information है, बहुत सारा expectation है. bullying हो रही हो सकती है बच्चे के साथ, और अधिक failure और rejection से encounter हो रहा हो सकता है बच्चे का. Being misunderstood and false blaming. So a child, अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि child is कुछ शैतानी करी किसी बच्चे ने, या लेबलिंग हो जा रही होती है बच्चों के साथ by the teachers and other students. This child is very mischievous. कुछ भी गलत हो रहा है क्लास में तो वो 2 4 बच्चों का नाम लगेगा, whether they actually involved or not. Or sometimes the child is trying to be a little playful, but वो उसी over playfulness में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ शैतानी हो गई, कुछ accidentally कुछ टूट गया. Maybe the glass of the room, the window pane of a classroom or something like that. Then the child gets into too much of a problem. They get scoldings by parents and teachers. Sometimes
The principal also ends up calling, and that's a difficult situation to grapple with. So naturally, as a child is growing, it's not all gala wonderful thing. हमने तो बहुत structured routine दे दिया है. We are very understanding adults in the world. पेरेंट्स कहते हैं हम सब कुछ तो तुमको दे रहे हैं, वी आर अर्निंग सो हार्ड फॉर यू, खाना बना बनाया मिलता है, सब कुछ तो मिल रहा है, प्रॉब्लम क्या है तुमका, तुम्हारी कीप स्टडिंग वेल, keep having good grades, participate in extracurricular activities or other achievement based exercises and activities so that you win accolades and medals and trophies. Teachers have their own set of expectations. Parents would also have demands with regard to behaviors. Teachers will also have demands with regard to behaviors. बच्चा एक परेशानी में ग्रस्त है, मेरा काम अपलोड नहीं हो रहा, चीज नहीं हो रही. The moment he utters a word, the teacher scolds him. Don't you have manners? Why are you interrupting the class in between when I'm talking? Now the child is struggling for the last 3 classes to make a statement to the child. वो जैसे ही बोलने लगता है अपनी बात, मैम 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 करके, वो मैम उनको शांत कर देती है. So there are a lot of struggles even with the growing up children that they keep on facing as they are going, by grade 4, 5, 6, 7, 8, different challenges keep cropping up. All this leads to a growing dynamic child with excessive fear, frustration, aggression, intolerance, impulsivity, reactivity, stagnation, and unwillingness to learn. So this means that if all this is there, whatever a child has been going through in terms of, bombardment of information and so many demands from the environment at the same time, the child is likely to experience some negative emotions such as these: fear, frustration, गुस्सा आने लगता है, बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है, तुरंत पलट के जवाब देने लगता है, किसी चीज के लिए टॉलरेंस नहीं रहती, पेशेंस नहीं रहती, इम्पल्सिव होता जाता है, फियर्स आ जाते हैं उसके अंदर, एंग्जाइटीज आ जाते हैं, ओवर रिएक्टिविटी पैटर्न आ जाता है, या कुछ करना ही बंद कर देता है, सीखना ही बंद कर देता है, होमवर्क्स करने ही मना करने लगता है, क्लासेस अटेंड करने मना करने लगता है, राइट? So actually, we see that it's all gala and beautiful around a child, but there's so much that he's being, that's so much impinging upon him, which he or she may not be able to handle at a given point in time. क्योंकि हर बच्चे का emotional quotient, intellectual quotient या intelligence quotient बराबर नहीं है. कुछ बच्चों के लिए स्कूलिंग की डिमांड्स एडिक्वेट हो सकती हैं, वो बच्चे कोप अप कर सकते हैं. कुछ बच्चे उसी क्लासरूम में बड़ी एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के हो सकते हैं और कुछ बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के भी हो सकते हैं. कुछ बच्चे एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद लर्निंग डिसेबिलिटी के भी हो सकते हैं. ठीक है, कुछ हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, बिकॉज दीज डेज वी हैव एन इंक्लूसिव क्लासरूम सिस्टम एज सजेस्टेड बाय सीबीएसई. तो एक ही गिवन क्लासरूम में कई विभिन्न एबिलिटीज से बच्चे हो सकते हैं, which may be the limiting factor for some to not be able to deal or grapple with the situational demands of everyday classroom situation. And above all, there is a particular personal world of every child which is different and not known to the teacher. टीचर को पता ही नहीं है बच्चे की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है. आर टीचर्स ऑलवेज अवेयर कि बच्चे की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? टीचर्स को पता होता है क्या? एनीबडी? No, ma'am. जनरली No, टीचर्स को ma'am. नहीं पता Really? होता कि टीचर, बच्चे प्रिटेंड करते हैं, एक स्माइल के साथ क्लासरूम में आ जाते हैं, एज दे स्टार्ट ग्रोइंग, थोड़ा सा बड़े हो गए, घर में मॉर्निंग में कितनी डांट पड़ी थी मम्मा से या पापा से, या घर में रात में कुछ झगड़ा हुआ था, या कोई घर में इल है, कभी कभी बच्चे उन चीजों की बात ही नहीं करते हैं. स्कूल में आते ही वो उसको छुपाते हैं या हाइड करते हैं, बिकॉज सम ऑफ दोज थिंग्स लीड्स देम टू हैव अ लो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम. तो वो उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, राइट? एंड द बिहाइंड वर्ल्ड, experiential world of a child is so much unaware, the teacher is so much unaware of it, right? That's not into the cognizance of the teacher. वो सब चीजें क्या हो सकती हैं जो टीचर को भी नहीं पता है, जो पर्सनल वर्ल्ड में बच्चे के चल रही हो सकती हैं? ऑल्टरकेशन इन द फैमिली, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में बहुत झगड़ा हुआ हो सकता है. दे मे बी अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, कुछ और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके चल रहे हैं, किसी और चीज को लेके चल रहे हैं. द चाइल्ड हैज बीन विटनेसिंग, द चाइल्ड कुड नॉट sleep till 3 in the night,
and still he's in the school tomorrow, the next day. The teacher is not aware. The teacher is demanding, where's the homework? The teacher is demanding, why didn't you do the work properly? Or probably, why are you not attentive in the class? क्योंकि बच्चे का माइंड रह रह के घूम के कल की बातों पे जा रहा है, घर के झगड़े पे जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटीज हो सकती है, parental conflict or divorce between the parents. So many times even the teachers are not even aware कि घर में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बच्चे के. एक रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो बच्चा रोज विटनेस करता हो. Teachers are not aware of that because the child is not coming and talking about it in the class to the teachers all the time or to his or her friends. They generally prefer to keep mum about all these issues. Abuse हो सकता है बच्चे के साथ. I, being a clinical psychologist and practicing for several years, there have been innumerable instances of uh, clients, particularly girls, जो molestation या sexual abuse during childhood जिन्होंने experience किया होता है. None of them, I tell you, actually come up and start talking about it at the time when it is happening. 2-4 साल जब तक उन्होंने यूजुअली दिस काइंड ऑफ अब्यूज इज इन द फॉर्म ऑफ इंसेस्ट. इंसेस्टुअस अब्यूज क्या होता है? जब कोई फैमिली मेंबर अब्यूज कर रहा होता है किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को. अब वो इंसेस्ट के विक्टिम्स होते हैं वो बच्चे, यानी घर का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, जो बड़ा व्यक्ति, ग्रोन अप व्यक्ति, जो उनको पेरेंट्स की एब्सेंस में अब्यूज या मोलेस्ट कर रहा है, जिसके बारे में वो डरते हैं बताने से, वो कहते नहीं है. And by the time they start talking about it, it's usually the time by then the abuse has already ended several years ago. 10, 11, 12 साल की उम्र में कुछ अब्यूज एक्सपीरियंस किया और उस फेज में वो उसके बारे में बोलते ही नहीं है, बिकॉज दे फियर कि कोई मुझ पे विश्वास करेगा कि नहीं. दे फियर रिजेक्शन. Nobody is talking to them about it, even if the child looks anxious, shy, resentful, बहुत गुस्सा आता है उसको, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, but nobody is talking to this child. पेरेंट्स रोज यही कहते हैं, यार तुम तो सीधे सीधे मुंह बात नहीं करते हो, तुम तो बदतमीज होते जा रहे हो. They do not actually have the time to sit with the child and ask कि बेटा सब ठीक है ना? What actually happens when I go to the office and you are left behind? Is there something wrong with you? Is there something that's troubling you? How many times do we have the time to sit with the child and talk about it? Hardly any. I'll tell you about, there are various instances of the mothers coming with their teenage daughters to me these days, wherein they come up with the complaint that, मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा behavioral issue हो गया है. She has started talking, she's getting too much attracted to the opposite gender. And she's talking nonsense to guys around. Now, the social media influence is coming up. फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अलग अलग प्रकार के लोगों से लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, आप कर लेते हो. ग्रोइंग अप चाइल्ड, a girl may not be aware what kind of different people may be around in the world. And now, when she's accepted the request, they may start talking something which is not very ethical or which may not be very appropriate. Now, the child does not even know. If the parent happens to seize it, instead of blaming or educating the daughter, they start believing there's something wrong with my own daughter, that she's talking to a guy like this or a person like this. She's not initiated probably a conversation like that. But there are unknown people in the world that need to be educated, whom to connect with on social media and whom not to. So usually blame हम बहुत ज़्यादा आजकल देखते हैं कि अपने बच्चे पे देते हैं without actually educating them adequately and without actually letting them know. And sometimes mothers and parents go with these problems to the teachers also. घर में ट्यूशन पढ़ाने आ रहे हैं जो ट्यूटर, उनसे बोलेंगे कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है इधर उधर. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड द एंटायर ब्लेम rests on the child without actually parents knowing and others knowing that this is a part of development, and it's a process of the vulnerability that our children have owing to the access to social media, the over uh, overuse of social media that's leading to, or uninhibited use of social media that people have been doing. Excuse me. Now, there may be bullying and harassment also that a child may be experiencing. Uh,
by other children, peer group children, or maybe slightly elder children at home or at other places. Life threatening illness to a family member may also be there. कभी कभी किसी बच्चे की मदर को कोई मेजर इलनेस है, कोई कैंसरस कंडीशन है, हेमीपरेसिस हो सकता है, यानी जिसमें the half of the body is paralyzed because of stroke or some kind of hemorrhage. Sudden death of a parent or another family member, sometimes a sibling, sometimes a younger sibling, किसी का accident हो गया, close family member का and all. So all those life situations may be there at the back, but teachers are not really knowing, because all this is happening in the world. It's not that we are in a classroom situation talking about all that all the time. Now, as children grow, reach their adolescent phases, there may be attraction, acceptance, rejection by a friend or an opposite gender friend. That may also be troubling the psychological well-being of a child, growing up child. Now, there may also be opportunities of exposure to harmful sexual experiences, and there may also be possibilities of getting exposure to substances, alcohol, or substances of abuse, right? नशे की चीजें या अल्कोहल या टोबैको का प्री मेच्योर यूज बहुत जल्दी बच्चे कई बार एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिसको वो मिसयूज करते हैं. सो दीज आर साइकोएक्टिव एडिक्टिव सब्सटेंसेस, और इन एडिक्टिव सब्सटेंसेस के टच में आ जाने के बाद जो बच्चा है उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी, द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वर्क, द टेंडेंसी टू फोकस ऑन एकेडमिक्स, वो पूरी तरह से डिसमेंटल हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, राइट? Now, there's a huge connection between verbal abuse and anxiety that everyone ignores. घर में हम लगातार बैठ के बच्चे को कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. द मोमेंट द चाइल्ड लॉग्स इन, आजकल तो वर्चुअल टीचिंग ही चलती है, so the moment the child logs in, the teacher is also complaining, where is your homework, why didn't you do this, why are you not answering, why is your mic put off, why is your camera put off, please put on this, please do this, show me your work, why did you do it, where are you, कहाँ ध्यान रहता है, lots of those things. I'll complain, I'll put a message in the group, I'll complain to your parents. So these are the ways, child is always dealing with, grappling with lots of anxiety, and he or she thinks that by avoiding work situations, people, he or she can actually escape the anxiety. तो जब वो चीज़ों को, क्लासेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, दैट इज द टाइम ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू अवॉइड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द जॉब, he is actually trying to avoid the anxiety associated with it, right? Now here comes a teacher. Now that was the background about the what is happening in the world of a child. उसने क्या महसूस किया when he started schooling, उसने क्या महसूस किया as he was growing up and going to senior classes, and what may be happening behind the school, behind the classroom, in the personal world of the child. And now there is a teacher which is there in the school, and who is probably, if you allow me to use the word, performing a very very defined and caricatured role. टीचर्स को यूजुअली हम एक तरह के रोल के लिए ट्रेन करते हैं. टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, वो पूरा करना है. आधे घंटे की क्लास है, 30 minutes to 40 minutes. The teacher doesn't have the time to talk to each and every child about his or her problems, his or her concerns. या उन बच्चों के जीवन में झांकने के लिए समय नहीं है उनके पास. And sometimes even if they discover, they end up believing that it's not their job. दे एंड अप बिलीविंग कि भाई मुझे क्या करना है यार, मुझे तो पढ़ाना है, सिलेबस पूरा कराना है, मुझे तो असाइनमेंट मांगनी है बच्चे से कि बच्चा कंप्लीट करे और जमा करे, मुझे तो नंबर लगाने हैं, अदरवाइज जीरो लगाऊंगी तो द सिस्टम विल आस्क मी कि मैंने उस बच्चे से काम क्यों नहीं ले लिया. Why could I influence the teacher, influence a particular student that he is motivated enough to perform the work? So she starts putting that extra bit of pressure on the child. काम करो, जमा करो, काम करो, जमा करो. And this is what is, creating more surmounting anxieties for the child. Now, apart from teaching, uh, there are a number of range of behaviors of students in school settings that also need to be responded to. A teacher may also be required to respond to motivating disengaged students. There may be students who are not motivated enough, and the teacher has to engage them in some way.
involve quiet and submissive students. So there may be some students in the classroom who are very quiet, very submissive, not interactive at all, and the teacher's role becomes to involve them also in a class. So resolving conflicts and issues between students, बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो they come to the teacher and complain. मैम इसने मुझे ये कहा, मैम इसने मुझे ये बोला, the child bullied me, the child said to me, and that also teacher has to look into. Building a culture of tolerance and respect in a classroom. तो वो भी टीचर को देखना है कि सब बच्चे एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं कि नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं कि नहीं, what kind of language that they are using, or are they tolerant towards each other's culture or cultural differences. That also teacher has a role to look into. Correcting faulty attitudes and behaviors, communicating effectively with the students or the counseling professionals, or sometimes with the parents of children as well. So this means that apart from teaching and completing the syllabi, and apart from actually getting the assignments done, a teacher has also to involve herself in some of these basic roles that she has to invariably perform, like a guardian or like a mentor, that who's like a senior person who's influencing the life of a student and is very much present. So nonetheless, we really cannot deny the very idea the teacher has a very high level of influence. She or he may not be aware, but the kind of influence he or she may have or bear on the life of a particular student or a child is something that we cannot really sometimes even imagine. And how impactful are each word and each statement of a student, of a teacher to his or her student. That is something they cannot even think of. Sometimes even years later, students remember. Had a student, I had a boy who, with a social anxiety disorder. People with social anxiety disorder generally have anxieties in, making friends with people, mingling with them, uh, attending social gatherings, or maybe sometimes, making a speech or addressing a public gathering. So this boy is actually happened to be an engineer. He had done his BTech. He was very intelligent. He was working in a company, earning well. But then he came to me telling that he experiences anxiety, and most of his anxiety was related to social encounters and social situations. And when I started talking to him, and eventually across sessions, I discovered at least three instances from childhood where there were certain experiences wherein a teacher was involved that meant demeaning for him, that lowered his confidence, sense of self confidence. One, he was asked by a teacher along with another two students who were doing some mischief, and according to him he was not doing, but they kind of kind of talking to him, and so he got involved and trapped in that thing, that the teacher got a misunderstanding that this particular client of mine is also involved with the other two students in doing the mischief in the class. So she actually made these children to take off their shirt in front of all other students, and then bend to become bend and sit down to become a murga in the class in front of all the students. And when I asked him, how old were you, which class was it, and he said it was grade 2. ग्रेड 2 यानी ऑलमोस्ट 7 साल की उम्र में करीब करीब पे उस बच्चे ने वो एक्सपीरियंस एनकाउंटर किया जिसने उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा लोअर डाउन किया, जिससे वो आज तक ग्रैपल नहीं कर पा रहा है। उसको आज भी वो विविडली याद है और वो उसके लिए इमोट करता है। There were other instances that he was telling a tutor used to come and teach me when I was in grade 6. And now he said that I realized that I was, since a prodigal, intelligent child, I used to ask many questions. And since the teacher was not capable enough to answer all of them, so he used to start scolding me. And sometimes he used to hit me also a little bit. And then he said that I used to find it, I would never able to understand it. But now he understands that, the teacher was unreasonable with me. So he said that I started feeling scared of asking questions. So that's the reason when I'm in a meeting, even if I'm presenting the right thing, even if I have a query which is very logical, I'm unable to say it out in front of the board in the meeting. So a lot of those self doubts creep in by virtue of not
my experiences with my peer group, my friends, or my parents, or my siblings. That may also develop in context of my schooling or my experiences with my teachers as well. Building a culture of tolerance and respect in the classroom. So this is we've discussed. Now, teacher of faulty or faculty are likely the first ones to notice the problem if sensitive. So, in case of the teacher or the faculty is sensitive, they are likely to be the first ones to notice if there is a problem with the child. A child is not regular, a child is not responsive, a child is not performing, then maybe the teacher can be someone who can look into the issue, may choose whenever or he has time to talk to this particular child. Most teachers do not have the adequate training to be able to interpret rightly what is wrong with the child, or sometimes they feel unprepared to handle these issues, which can lead to avoiding or ignoring these important concerns altogether, which may eventually lead to some kind of pathology with the child, or some kind of major psychological disorder. Now, we have expanded the role of a teacher over the years with the initiatives by the government and the education policy makers. A teacher is no longer a teacher alone. She's also a mentor and a counselor to the students. There has to be effective use of counseling skills, which can facilitate better relationships with students, colleagues, and even family members for the student, for the children. Teacher can play to an extent the role of a counselor along with being a mentor to the students. Now, what is counseling? If the teacher has to perform the role of a counselor as well, a teacher is a counselor, then what is counseling? He or she really needs to understand. Now, before talking about what counseling is, I would just like to highlight there are some commonly mistaken assumptions about counseling. Counselors listen to people's problems and then give them sound advice. So, this is a myth. This is basically a misinterpretation of the role of a counselor. A lot of people think that if I go to a counselor, he or she will listen to my problem thoroughly and will give me some good advice about what should I do. I, being a psychologist and a counselor myself, so a lot of people come and say that ये मेरी problem है, and once I've listened them for one good whole hour, they tell me अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, right? So this is the impression that the client also carries, that the counselor is going to provide me some direct advice. Sometimes counselors, and when we're working as a counselor, we believe the more questions we ask, the more information we will be able to obtain from the client. So we begin a session by asking many questions to the client. तो फिर आप ये कैसे करते थे, फिर वो कैसे करते थे, फिर ये कैसे हुआ, फिर वो कैसे हुआ. We're talking too much, and letting the client talk less is not something that's going to work in counseling. Agreement and sympathy are the same as empathy. Now, this is yet another very important misconception. Misconception that agreement and sympathy are the same as empathy. So, counseling में हम empathy की बात करते हैं, ये तो सबको पता है. लेकिन क्या एग्रीमेंट एम्पैथी का अर्थ है कि हम सामने वाले की हर बात में हाँ मिला दें? We show agreement to that. That is what empathy is all about. हम एम्पैथी कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, एम्पैथी होता क्या है? So that we'll talk about in a little while later. आगे हम देखेंगे. लेकिन if we have to show agreement, if we show agreement, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम empathize कर रहे हैं client से. Also, if I show sympathy, that is also not empathy. Agreement is actually about nodding to everything that a client has been saying, and even using words to say हाँ नहीं नहीं बिल्कुल यही सही था, आप यही कर सकते थे, और हो क्या सकता था, this is what you could have done in this situation. This is what the agreement, showing agreement, is all about. That is not the job of a counselor, to approve of every behavior of the client. The client is your student. Remember that we are teachers. Sympathy में क्या होता है? Sympathy is about, actually too much relating to the client and then starting emoting for the client situation. A client comes and tells me that, I lost my mother.
About a month back, suddenly, due to a particular cancerous condition, we couldn't save her. And I was just not prepared. And I was the first one to see her on the deathbed. And, I'm tormented. I feel low. And I, as a counselor, listen to her entire story and get tears in my eyes. Poor thing, bichari, at the tender age of 18, she's lost her mother. No, that is not empathy, that is sympathy. If I start emoting and start feeling sorry for the client and start feeling कि अरे बेचारा, जैसे वो आपको वो पिटी की फीलिंग आती है किसी के प्रति, वो सिंपथाइज करना होता है. When you start looking down upon the client as someone जिसकी जीवन में कुछ बहुत खराब घट गया है, that is what sympathy is all about. So certainly that is not empathy. Then positive thinking is the same as rational thinking, right? Now, rational thinking kya hota hai? In counseling and psychological therapies, we generally talk about think rationally. Think rationally means logically, right? Thinking logically is not the same as thinking positive. Positive thinking kya hota hai? Just positive socho, positive. Positive soche kaise? Kahan se soche? Positive thinking hoti kya hai? And sometimes some people end up saying ki rational thinking karo. तो लॉजिकल बात सोचो. यदि किसी समस्या का जीवन में सॉल्यूशन नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करना, वो भी रैशनल थिंकिंग है. दैट मे नॉट बी द पॉजिटिव थिंकिंग. So accepting the life situations, some situations that warrant a problem solving approach, we should take a problem solving approach for them. There may be certain situations that may want or warrant us to understand and accept them. Then in that situation, that is rational thinking. Positive thinking sometimes would only mean, you know, denying a particular fact and reality and not proceeding further. A child, the doctor says, your mom is not well and she's suffering from a particular illness condition. She may not be able to survive for more than 3 months. And if someone says positive thinking, karo nahi, nahi, sab kuch theek hi hoga. Certainly aisa hoga. That may be interfering with the idea of rational thinking. ठीक है, उससे हम रैशनल थिंकिंग नहीं कहेंगे. पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है, which is required, wherein we start believing that if I pray well, if I provide good treatment to her, nothing wrong shall happen. We can uh, do certain things to increase the longevity of her life. We can provide her the best treatment possible. We provide her the best love, the care, whatever is required, so that I'm sure she will do well. I'm sure she'll improve well. I'm sure she'll have minimal suffering and she'll start getting better with that. So that's like rationally thinking and dealing and rationally grappling with the situation, right? Now, as per the definition, what is counseling? The counseling is a dynamic process. यानी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, स्टैटिक चीज नहीं है. एक सेशन को हम काउंसलिंग नहीं मानते यूजुअली. काउंसलिंग इज बेसिकली अ डायनेमिक प्रोसेस, यानी एटलीस्ट few sessions will be required in order to say something as a counseling. Although there may be single session counselings also, वो भी होता है, लेकिन generally हम उसे process की तरह ही देखते हैं, that involves developing a purposeful therapeutic relationship between a client or a counselee who willingly visits to seek help and a counselor who is a trained professional attempts to assist and help the client in resolving problems that are psychological, emotional, interpersonal, and behavioral in nature. So we see that counseling is not static, one type of process, it's dynamic in nature. So it's completely contingent upon the nature of the problem of the client, the age of the client, the support system of the client, the understanding of the client, the intellect, the emotional development of the client. Lots of those things are there. The same technique, the same approach may not apply to every individual, right? And then it's a process that's going to change its nature from one session to the other. The role of the counselor is not always passive across every session. They would always be sitting and listening to whatever the client has been saying, and that will result in therapy, that would be therapeutic and healing. No, becoming an agony aunt to your client is not being a counselor. Although one may be required to behave like an agony aunt on certain सेशंस, कि क्लाइंट को कहना है, खास तौर पे शुरुआती सेशंस पे. माय फर्स्ट सेशन विद एवरी क्लाइंट,
I speak very less. I let the client speak. They may go on and on even for 1 hour. I'm very, focused. I'm into very focused way listening to their concerns. It's not that I'm indifferent and I'm just letting them talk. I'm taking a note of everything that they're saying mentally, not everything on paper, of course. I'm just listening, and I'm actually listening with my full attention and focus, because I'm not going to ask those specific facts to the client again and again, saying that अच्छा वो आपने क्या बताया था मैं भूल गई, अरे वो आपने क्या उस दिन बोला था मैं मुझे याद नहीं है. I remember the life stories of my clients just like that. I would not jot them down like that on paper all the time, although that's a good way. And you initially do it, when you learn to take clinical history of the clients. But you, as a teacher, may not require to do that. You just need to remember, right? Now, there's a definition by American Counseling Association also about counseling. This is not important for you to know. We really actually are talking about teachers as counselors. But this is just a definition. You can just keep it with you if you want to refer to it in some occasion. Now, counseling is an effective communication between two people that is purposeful with the following objectives: understanding the client's position with regard to his or her concerns without being judgmental. So, certainly, counseling is about being non judgmental, allowing the client to speak his or her heart out, expressing his or her concerns without much fear of being reprimanded, criticized, what the person is going to think about me if I tell this or that. That kind of apprehension one is not really worrying about or carrying. जब इस पर्सपेक्टिव से कोई आपसे बात कर सकता है तो सर्टनली वो एक काउंसलिंग प्रोसेस में है और आप अपने काउंसलिंग रोल में हैं. Help generate insight into maladaptive and obstructive or destructive patterns or ways of life. So during the counseling, we not only listen, help the client emote and express emotions, express whatever he or she wants to say, experience. No, that's just one part to it. Then the important part comes is helping the client generate insight into the maladaptive and obstructive and destructive patterns and ways of life of that individual. Somebody comes and tells that I have a history of abuse, and then as a counselor, I take all the instances and narratives of the client. And then one fine day, I have to tell the client that, but then that's not an excuse for you to continue living as a depressed person for the rest of your life, too, because something happened in the past that was not acceptable or that created a turmoil. Let us not bring the turmoil of the past into my present. Let me start walking through my life from this moment on in a meaningful manner. And then, as a counselor, I would direct them how to go about it. So, bringing about that insight that it's very bad that something wrong happened, but then that doesn't mean that I have to catastrophize it and keep crying over it for the rest of my life. Now, and yet another important aspect of counseling is building trust and empathy, that the communication is facilitative in bringing about the desired, not the change in behavior. I put a cross against change in behavior. Client काउंसलर के पास कभी भी चेंज इन बिहेवियर के लिए नहीं आता कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है और मुझे चेंज करना है. समटाइम्स दे एंड अप सेइंग लाइक दैट सुपरफिशियली ओनली, वरना हर इंसान अपने हर बिहेवियर को सही ही मानता है. उसको कुछ डिजायर्ड पॉजिटिव आउटकम चाहिए. डिजायर्ड पॉजिटिव आउटकम मे ऑल्सो मीन कि अपने ही अंदर व्यक्तिगत कुछ चेंज चाहिए हो सकता है, लेकिन जब तक हम ये कहें कि अच्छा अब आप आ गए आपके व्यवहार में हम चेंज कर देंगे या चेंज कर सकते हैं, दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट. क्लाइंट तुरंत ऑफेंड हो जाएगा, भले ही वो खुद अपने से एक है कि मुझ में बहुत सी कमी है और मैं अपने अंदर बदलाव चाहता हूँ. द मोमेंट आई ऑल्सो से अच्छा ठीक है हम ऐसा ऐसा काउंसलिंग प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, है ना. सून द चाइल्ड, द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग ऑफेंडेड. अरे इसने तो मुझे जज कर दिया. दिस काउंसलर और थेरेपिस्ट इज जजमेंटल. इसने मुझे जज किया, इसने मुझे नेगेटिव पाया, इसने मेरी कमियों को रैशनलाइज नहीं करा, नहीं समझा. He or she did not understand me in my life context. Rather, like most other people, he or she saw my limitations. So, in that sense, he or she is not a good counselor or a good therapist. So,
I'm doubtful whether I can continue with this person or not. Right? Now, some basic principles of counseling. Now, each client must be accepted as an individual and dealt with as such. The counselor does not necessarily approve of all behavior, but still accepts the client as a person. Counseling is basically a permissive relationship. That is, the client has permission to talk about various experiences without being reprimanded or charged. Counseling emphasizes thinking with and not for the client or the individual, and all decision making rests with the client. So this basically means that counseling is not about you let the client talk anything and everything, you know. But yes, the client can talk all about his or her experiences without the fear of being reprimanded. And counseling emphasizes that the therapist is with the client, and helping the client think about what can be done in the given situation, and not just the client has to be passive and the counselor is doing all the thinking for the client कि अब क्या किया जाए, अब क्या we are not doing the plannings about the life situations of the clients, right? And above all, the prerogative to decide what exactly is to be done rests in the hands of the client. The counselor should never think, मैंने इसकी इतनी बात सुनी, इसको इतना बताया, like a normal individual, इतना इसको मैंने इतने अच्छी राय मशवरा दिया, इसने तो कुछ भी follow नहीं करा. So it's not going to happen like that in counseling, right? The objective of a counselor when he or she is providing counseling is not that कि मैं इसको जो भी बता के भेजूंगा, बोल के कहूंगा, वो सब ये घर जाके follow करने वाला है. So I'm not an authority figure. I'm just giving certain kinds of insights and directions. Now, factors that influence change, the required desired positive outcome or change, is influenced by certain kinds of factors. There is physical setting or confidentiality that has to be looked into, structuring and setting goals for the session. There may be certain qualities of the client and certain qualities of the counselors. Let us look into some of these important variables. Physical setting. तो फिजिकल सेटिंग नॉर्मली भी काउंसलिंग के लिए कहा जाता है दैट इट शुड बी प्राइवेट, privacy. The other day I witnessed that a particular boss of a particular organization, she called, the doctor who happened to be the owner of the hospital, she called her nursing staff and she said a few things to them in front of some other staff people sitting, certain limitations in their work. And then later on, those nursing staff, they came and they told the boss, the doctor, मैम आपने ये बात हमें अकेले में कही होती तो बहुत अच्छा होता. अगर ये बात आप हमसे अकेले में कहते तो हमें लगता कि अच्छा हमें ये करेक्शन करना है. अब ऐसा कहकर ना आपने जिन लोगों के बीच में कही, उन लोगों के बीच में तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो गई. अब वो हमेशा यही कहेंगे, तुम लोगों को तो मैम भी यही कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है. So privacy is very important. If I have to really talk to somebody about his or her problems and concerns, to understand his or her world, or talk about his or her limitations, it's very important that I do that in a private setting. Maintain confidentiality about it. So it's very important that whatever transpires between me and my client, who happens to be a student, because I'm a teacher in this particular context, that has to be confidential as well. Only the student and the teacher should be aware what is being talked about between two of them when they are addressing a particular concern of the student. Not that it should become a talk of the town. The teacher goes back in the staff room and discusses what was the discussion with the student is not going to be a very welcome idea, right? The teacher should ideally keep that talk, the dialogue with the student, very, very confidential. Quietness. Now, it's very important when I'm talking something very important to a particular person who is a client in the present context. When I'm a counselor, although I may be teacher, otherwise in the client is my student, it's very important that the environment is free of any distractions. If there are too many distractions, too many people around, just outside the door talking, when I also feel that I can be heard what I am talking to this teacher by people outside, if everyone can see whom I'm sitting with and talking to for an hour, or maybe there are other distractions by sounds or repetitive calls coming in
for the teacher and she's intermittently or he's intermittently attending those calls, then I do not feel that I'm being heard as a client. So it's very important that when I'm sitting for counseling, there should be minimal distractions and I should take only very important calls and should try to concentrate directly on what I'm talking to the client. Comfort is also, something very important. I'm sitting in a comfortable environment, a comfortable chair at least, if it's not a very formal setting, it should be a uh, regular arrangement wherein one may be sitting side by side rather than exactly face to face like an authority boss figure on a table, and टेबल के एग्जैक्ट सामने हमारा क्लाइंट है, दैट may not be a very appropriate arrangement. Sitting squarely means adjacent, कोई राइट साइड पे आपके क्लाइंट बैठा है, that is a better idea, right, when you are trying to provide counseling. Now, goals and guidelines. Goals are mutually agreed upon targets. you know काउंसलिंग में कभी ऐसा नहीं होता कि हमें कोई भी बात अपने क्लाइंट पे थोपनी होती है. I never tell my clients who have difficulty getting up and maintaining a schedule, and they are feeling low most of the time, बहुत सी anxiety है, mood depressed है, उठने का मन नहीं करता. So if I have to tell them begin your day with deep breathing, so I do not say tell them 6 बजे सुबह उठ जाना, फिर deep breathing start करना, फिर फिर ये करना, फिर वो करना. No, I do not have high demands. I tell them जब भी आप उठते हैं, जितने भी बजे आप उठते हैं, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे डू नॉट इवन लीव द बेड इफ यू डोंट वांट टू. आप बैठ तो सकते हैं ना, थोड़ी देर में आप बैठ जाइए, बैठ के स्टार्ट डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम, दैट इज गोइंग टू ऑक्सीजनेट द सेल्स ऑफ योर ब्रेन, right? Then I tell them, if they agree to that, can you do it 11 counts? They say yes, yes, 11 counts deep breathing I can do. Okay, so then after that, can I pick up 3 yoga exercises, just 3 or 2 or 4? What do you say? They may say okay, 3 is okay. Okay, 3 yoga exercises, each to be done for 3 counts. Is it okay for you? After deep breathing, would you be able to do? If the client says yes, or if the client says no, it's heavy for me, so I say okay, let's reduce it one, then let's reduce one, we'll make it 2. So take only 2 yoga exercises after your deep breathing exercises done. Practice all these 2 exercises for 3 counts or 5 counts, and the client finds it comfortable. I'm not telling him to do jogging in the morning, leave the bed. Somebody who's feeling depressed is not able to. So important thing is that what I'm trying to emphasize is that when we are trying to counsel a client and trying to make him or her functional in the appropriate manner, we are trying to set goals or targets which are mutually agreed upon. Mutually agreed upon means the client and the counselor both should agree कि हाँ ये करा जा सकता है, इतना टारगेट तो हम अचीव कर सकते हैं. So it should be mutually agreed upon. Goals are specific. Specific goal हम रखते हैं, बड़ी specific सी चीज रखते हैं, ये छोटी सी चीज जिसको किया जा सकता है, जिसको हम measure कर सकते हैं, quantifiable हो, measurable हो, आउटकम और प्रोसेस ओरिएंटेड हो, रेलेवेंट हो बिहेवियर के लिए या प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी आर प्लानिंग and discussing with the client what is to be done about the given problem or concern. Now, client qualities. Client की भी कुछ qualities होती हैं जो determine करती हैं कि counseling जो आप कर रहे हैं वो successful होगी कि नहीं होगी, even as a teacher. So effectiveness in counseling depends largely on the readiness, resistance, or commitment on the part of the client to make changes for self and work in alliance with the counselor for positive results. तो क्या काउंसलर जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो जो काउंसली है या क्लाइंट है वो रेडी है उसके लिए, या उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, या वो कमिटेड है? दैट विल डिटरमिन. मदर ले आई डॉटर को कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, या बच्चे को, बेटे को, लेकिन द चाइल्ड डजंट सी एनी प्रॉब्लम विद हिज और हर बिहेवियर. The child feels that I'm all okay. It's the misinterpretation on the part of my mother. She's thinking or probably living in another world. She's from another generation. So in that sense, there is a clear-cut lack of insight. Probably, if in case if that's a genuine problem with the child, there is no readiness to sit for the intervention, and there is also no commitment on the part of the client, because such a child will not turn up for the subsequent sessions.
आपने इंटरवेंशन शुरू तो की, लेकिन वो बच्चा लौट के ही नहीं आ रहा, वो क्लाइंट आ ही नहीं रहा है वापस, उसमें रेडीनेस ही नहीं है, या आपने जो भी बात बताई वो उनको फॉलो ही नहीं कर रहा है. So that will also interfere with the success of therapy. So there are certain qualities of the client also that may interfere or determine the success of counseling process or not. And now, most importantly, now we look at the qualities of the counselor. Now, this is a special situation, counseling situation that we are talking about, where teacher is a counselor. So, teacher as a counselor, and who is student or who is a client? Child or student as a client. तो जब टीचर काउंसलर है और चाइल्ड एक क्लाइंट है, तो ये एक डिफरेंट तरह की स्पेशल काउंसलिंग सिचुएशन हो गई. इस स्थिति में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दैट द स्टूडेंट ऑफन वी सी दे लैक इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम. उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अक्सर स्टूडेंट को खुद इंसाइट नहीं होती है. Teacher may have observed the problem. Peer group, other children are reporting. Peer group of the child reports concerns. Parents observe and report the problem. तो हो सकता है टीचर के द्वारा प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी गई हो बार बार, या दूसरे बच्चे उस बच्चे की शिकायत करते हो कि ये बच्चा बहुत बुली करता है या उसके कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, या फिर पेरेंट्स के लेवल पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हो रहे हो जिसकी वजह से उनको लगता हो कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, एंड दे मे रीच आउट टू द टीचर टू प्रोवाइड हेल्प और समटाइम्स टू काउंसिल द चाइल्ड कि हमारी बात तो नहीं सुनता बच्चा, आपकी और अधिक और बेहतर सुनेगा, और द चाइल्ड में may probably attempt to make some changes. Help the child develop insight into the problem. Now, herein, the goal of the counseling and the role of the teacher as a counselor, firstly, is to help the child develop insight into the problem. अब ये कैसे करना है? इसके लिए हम ऐसा नहीं करते कि हम बच्चे को बुलाए और बताना शुरू करें, देखो बेटा आपकी मम्मा को लगता है आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके पापा को लगता है आपके साथ ये प्रॉब्लम है, या आपके दोस्तों को लगता है आपके साथ ये प्रॉब्लम है, या मुझे और टीचर्स को लगता है आपके साथ ये प्रॉब्लम है. No, we're never going to begin like that. Then how are we going to begin with it? Students, are you there with me? Hello, are you Yes, listening, ma'am. students? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. बेटा, अब आप मुझे बताइए, अगर एक बच्चे के साथ कुछ बिहेवियरल इशू आपने ऑब्जर्व किया और आपको उसकी काउंसलिंग शुरू करनी है, तो आप क्या सोचते हैं, आपको कैसे उससे बात करनी पड़ेगी? क्योंकि बच्चे को तो अक्सर इंसाइट होती नहीं है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है. In a friendly way, ma'am. ओके, Friendly वेरी nature. गुड. फ्रेंडली वे में हम क्या बात करेंगे उसको? हम अच्छे से बात करके उसको ये बताएंगे कि बेटा आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फ्रेंड्स का ऐसा मानना है कि आप बुली करते हैं ज़्यादा, या पेरेंट्स का ये मानना है कि आप बहुत कैलोस हो रहे हैं, या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या झूठ बोलने लगे हैं, या चोरी करने लगे हैं, और द टीचर में हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि आप अक्सर काम नहीं करें. आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट डायरेक्टली? No, ma'am. No, ma'am. तो फिर हम क्या बात Ma'am, we करेंगे? can give exam. Ma'am, we can talk in the context of another student or his or her friend that uh, one of your friend has been observed to do like this, bullying or stealing. Then that we can slowly give an insight to the child. Okay, That so is it right or this wrong? is a good way. Storytelling, as you're saying, is always very useful. पर बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर टीचर ने अलग से बुला के इस तरह की कोई बात की तो वो समझ जाएगा मेरे बारे में कुछ कहना चाह रही है. है ना? ऐसा होगा, मतलब अभी तो यू विल स्टार्ट जस्ट बिगनिंग विद योर करियर एज अ टीचर. तो जब आप जाएंगे बाहर, यू विल मिंगल विद चिल्ड्रन एज स्टूडेंट्स, देन यू विल सी हाउ मच दे नो, हाउ मच दे अंडरस्टैंड. Okay, let's see. Let's together try to see. And if you have some suggestions and your own insights about how to go about it, you can always share it, right? So how to begin? We begin by talking neutrally to the child. न्यूट्रल टॉक हम शुरू करते हैं बच्चे से. हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत बाद में आएगी. हम पहले बच्चे को उसके लाइफ कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं. So begin by talking neutrally to the child, not about the problem, but about the child. Just talk about the child. उस बच्चे को हम पूछते हैं, अच्छा बेटा आप what is your date of birth? Do you know? अच्छा आप कहाँ रहते हो? ये छोटी छोटी बातें पूछने से आपको बच्चे के जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में, सेल्फ वेयर अबाउट्स के बारे में, लाइफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चलता है. मम्मी कहाँ काम करती हैं,
पापा कहाँ काम करते हैं, मम्मी कब तक फ्री होके आती हैं, पापा कब तक फ्री होके आती हैं, फिर आप घर पे क्या करते हो, घर में कौन आपका ध्यान रखता है, पढ़ाता कौन है, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है. Sometimes, I often ask my clients when they're small children, I ask them, small children means थोड़ा सा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के हैं, तो बातों बातों में यू विल ट्राई टू आस्क, अच्छा सबसे ज्यादा आप किससे अटैच्ड हो फैमिली में, मम्मी से, पापा से, या अपने किसी सिबलिंग से. ओके, तो आपकी मम्मी से कैसी बनती है, पापा से कैसी बनती है, भाई से कैसी बनती है, या बहन से कैसी बनती है. So they tell it all. They're going to tell you everything. Sometimes you can even ask them to draw the family picture or draw the figure of a person, and then you tell them, अच्छा इस फिगर को जिसको आपने ड्रॉ किया है, चलिए हम उसका नाम एक सोचते हैं, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, उसके हॉबीज क्या होंगे, उसके फियर्स क्या होंगे, एंग्जाइटीज क्या होंगे. तो ड्रॉ पर्सन एक साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी है, बट इफ इट्स नॉट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, आप जनरली वी थ्रू सर्टेन ड्राइंग्स, और वाइल डूइंग सम ड्राइंग्स, पर्टिकुलरली अगर वो छोटा बच्चा है तो. लेकिन वो जरा सा भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रेड का हुआ, तो आप ड्राइंग करते करते बात करने की गलती कभी मत करना. द चाइल्ड विल गेट वेरी ऑफेंडेड. एट नाइन्थ के बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं. आप वन टू वन सीरियस टॉक कीजिए, मीनिंगफुल टॉक कीजिए, वो उनको अच्छा लगेगा. टॉक टू देम अबाउट देयर वर्ल्ड, देयर फियर्स, देयर एंग्जाइटीज, देयर कंसर्न्स. वो सब बात करेंगे, प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड देम अ कॉन्फिडेंशियल सेटिंग, a confidentiality which is expressed and communicated to them. यानी हमको उनको बताना पड़ता है. I tell my every client, the moment they walk in, that this is a confidential setting, और आपके और मेरे बीच में जो भी बात हो रही है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में. सो इवन इफ आई एम टॉकिंग, द पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं अपने टीनेज बच्चे को, तो मैंने मदर से पहले आधा घंटा बात कर ली, 15 मिनट बात कर ली. आफ्टर दैट व्हेन द चाइल्ड इज कॉल्ड इनसाइड, तो मैं पहली चीज उसको ये बताती हूँ, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल सेटिंग, और आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में है. आ, वो आपकी मम्मी या पापा से आपकी इच्छा के बिना बिल्कुल डिस्कस नहीं होगी. इफ यू वांट समथिंग एंड अलाउ एंड परमिट की कोई बात उनसे शेयर हो तो वो शेयर होगी. इफ यू वुड नॉट वांट मी टू शेयर एनीथिंग विद देम, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टू देम. सो यू कैन फील फ्री एंड कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट यू विश टू शेयर विद. फिर कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस, कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एक थेरेपिस्ट और काउंसलर के लिए. वहाँ एथिक्स इन्वॉल्व होता है कि वो पेरेंट्स को बताएं जाए. हमें कुछ ऐसी इंस्टेंस ऑफ अब्यूज के बारे में बच्चे से पता चला एंड ऑल. सो वी टॉक अबाउट दैट टू द क्लाइंट एंड वी टेल द चाइल्ड कि क्या इसके बारे में आपके पेरेंट्स से बात करी जाए, या आपने कभी उनको बताया, नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, या आपने बताया तो आपको लगता है कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं शो करी या ट्रस्ट नहीं करा आपकी बात पर. देन वुड यू लाइक दैट, वुड यू वांट मी टू टॉक टू देम अबाउट इट. अक्सर आप महसूस करेंगे अगर आपने उन पे क्लाइंट ने, बच्चे ने फेथ इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो बिल्कुल ये चाहेगा कि आप उसके बिहाफ पर उसकी सारी परेशानी आपके पेरेंट्स से कह दो. तो वो खुद ही आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप, हाँ, ये मेरी मेरी ये वाली बात भी बता दो मेरे पेरेंट्स को, मेरी ये वाली परेशानी भी बता दो, मेरी ये वाली चीज भी कह दो, मेरी वो वाली चीज भी कह दो. So it's all about how we can relate to the child and how we can explore the world of the child. तो जब हमने बच्चे से बात करनी शुरू करी, तो हमने उससे बिल्कुल इस तरह से बात नहीं करी कि उसके साथ प्रॉब्लम है और हम उसकी प्रॉब्लम करेक्शन के लिए बुला रहे हैं क्योंकि मेरे पास तो टाइम की कमी है और मुझे और भी काम करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूँ. इस अप्रोच से हम एक अच्छी काउंसलिंग नहीं दे पाते. So we have to find out some free time. Sometimes it has to be an unlimited time. आपने सोचा 45 मिनट्स का सेशन लेना है बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट बात कहना शुरू कर चुका है और उस बात को डिस्कस कर रहा है. सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट द वॉच एंड कट हिम और हर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और वहां बात करेंगे. वो बात, वो इमोशन, वो एक्सपीरियंस, वो आपको उसी वक्त इमोट करवा के उसको एंडिंग तक लेके जाना है. उसको बीच में रोक दिया तो हीलिंग प्रोसेस कभी होगी ही नहीं, वो फेथ कभी डेवलप होगा ही नहीं, वो ट्रस्ट आएगा ही नहीं, वो शेयरिंग होगी ही नहीं. राइट? So begin by exploring the world of the child, his or her interests, abilities, limitations, fears, anxieties. And I often make it a point when I've really understood the world of the child, he or she in his or her context. बहुत सारी बातें कर ली. End of the child पे I build up hope for the child. कि I think now you have come here, and I'm here, and I'm ready to provide you, some kind of, we are going to work together
to find what best can be done to get out of these problems and issues in your life that are cropping up and troubling you so much, right? तो अब इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अब हम इस पे कुछ काम करेंगे। तो आर यू रेडी टू वर्क विद मी, विल यू बी कमिंग टू मीट मी अगेन, लॉट ऑफ दोस थिंग्स आई टॉक टू द चाइल्ड, एंड देन पेरेंट्स के साथ भी हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे या बात करेंगे। इवन इफ यू आर अ टीचर और एक टीचर काउंसलर के रोल में हो, तभी भी जैसे पेरेंट्स कोई कंसर्न्स एक्सप्रेस करें एनवी से कि अच्छा मैं बच्चे से बात करूंगी, फिर मुझे बच्चे से दोबारा बात करनी पड़ेगी बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। तो एक बार बात करने से बात नहीं बनती, कई बार 2 4 5 बार बच्चे से बात करनी पड़ती है उसी इशू पे। सो वी टॉक टू द चाइल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि हम कब दोबारा मिलेंगे, आप कब आना चाहोगे, ट्रीट द चाइल्ड लाइक एन अडल्ट, help him or her take decisions in a mutual manner and show trust। तो बच्चा आपकी तुरंत बात सुनने को तैयार हो जाएगा, अपने सारे फियर्स एंजाइटी सब एक्सप्रेस भी करेगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा आता है और कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी ने कहा था, पापा ने कहा था, उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, वो लेके आए। देन यू आस्क द चाइल्ड, अच्छा आपको क्या लगता है, उनको क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं आपके साथ, क्या बताते हैं वो, क्या चीजें हैं, कुछ बात कहते हैं वो, कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इश्यूज बोलते हैं। देन द चाइल्ड विल से, हाँ उनको मेरे बहुत देर तक फोन पे गेम खेलने की आदत से प्रॉब्लम है, मेरे स्लीपिंग हैबिट पैटर्न ठीक नहीं है उससे प्रॉब्लम है, मैं होमवर्क नहीं अपना पूरा कर पा रहा हूँ, असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं जाते, मेरे टीचर्स कंप्लेन करते हैं तो उससे प्रॉब्लम है, कभी कभी मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और मैं अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह पीट देता हूँ, कभी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ तो उससे प्रॉब्लम है। So then you begin by asking the child, so do you think any of these things are actually problematic? कुछ ज्यादा हो रहा है इन चीजों में या सब ठीक ही है, सब प्रॉपर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? देन समटाइम्स यू सी एक दो चीज तीन चीज के लिए बच्चा थोड़ा थोड़ा हामी भरता है, कहता है हाँ नहीं मुझे लग रहा है, हाँ थोड़ा तो ज्यादा हो जाता है, थोड़ा तो वो जो हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, द मोमेंट यू टेल यू आर रॉन्ग, तो एक तुरंत एक काउंटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बिल्डअप होता है जो कहता है नहीं, जिसके तहत व्यक्ति अपने आप को रैशनलाइज करके अपने व्यवहार को सही बताने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम व्यक्ति को स्वयं ये अपॉर्चुनिटी दें अपनी इंसाइट से ये तय करने की कि मेरे साथ कुछ समस्या है या नहीं, कौन सी चीज समस्या है और कितनी समस्या है, तो व्यक्ति अपने आप चिंतन करता है, अपने आप में कंटेम्पलेट करता है और फिर डिसाइड करके कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पे आने लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। देन यू टेल द चाइल्ड, वो आप सब कुछ करो जो आप करते हो, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाएं, कुछ स्ट्रक्चर दें चीजों को, ताकि कुछ और चीजें जैसे मम्मी 2 3 चीजों के लिए परेशान है, पापा 2 4, वो भी डालें क्या रूटीन में? ठीक है, क्या ऐसा कर लें, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर कर लें क्या, रूटीन को थोड़ा सा ऐसा बना लें क्या, थोड़ा सा क्लासेस में थोड़ा टाइम देके उसके बाद ये वाला काम कर लें। सो मेक टाइम फॉर एवरीथिंग दैट द चाइल्ड वांट्स टू डू, make time for everything the child is interested in doing. And sometimes you also need to psychoeducate the parents that there are certain age appropriate behaviors also, or situation specific behaviors also, like पेरेंट्स बड़े परेशान हैं आजकल कि बच्चे क्लासेस ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस अटेंड नहीं करते। जब हमने बच्चे के हाथ में एक खिलौना दे दिया, एक गैजेट दे दिया और फिर एक्सपेक्ट किया कि बेटा पढ़ाई करो, तो कैसे होगा? थोड़ी देर के बाद तो उसकी टेंशन ड्रिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने 1 to 1 अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई है नहीं। टीचर है बट वो वर्चुअली अवेलेबल है, उसको तो सामने दिख नहीं रहा, आपका कैमरा ऑफ है, आप कहाँ क्या कर रहे हैं टीचर को हर समय नहीं दिख रहा है। तो ह्यूमन टेंडेंसी टू स्नीक आउट, चोरी करना, चीट करना, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक बड़ी हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है। और सुपर ईगो, हमारा मोरालिटी जिसको हम कहते हैं, वो उतना बढ़िया से बच्चों में तो स्पेशली नहीं डेवलप होता। अगर कोई सामने नहीं खड़ा है तो हम 1 से 2 चॉकलेट लेके खा लेते हैं, मम्मी सामने नहीं है तो चुरा लेंगे, एक नहीं तो लेके खा ले, ठीक है। तो ये गड़बड़ियां हमें करने की आदत होती है, तो थोड़ा सा तो वो बच्चा वो करेगा। पेरेंट्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं जब बच्चा कुछ वो क्या खेलते हैं बच्चे आजकल, फ्री फायर एंड ये सब गेम्स जब बच्चे बहुत खेलते हैं तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। एंड आई टेल देम, डोंट वरी, डोंट एक्सपेक्ट टू मेक योर चाइल्ड अ लोनर। अगर लॉकडाउन है तो बच्चा अकेला घर में रहे, ऐसी अपेक्षा मत रखिए अपने बच्चे से।
इस उम्र के बच्चे को सोशलाइज करने दीजिए, ये उसकी बेसिक इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो जब, बस ये ध्यान रखिए कि जब वो गेम्स खेल रहा है तो वो अच्छे और सही लोगों से मिल रहा है ना, यानी वो बच्चों से खेल रहा है जो उसके फ्रेंड्स हैं, अदरवाइज भी क्लासरूम में या घर के नेबरहुड में आसपास में वो सही बच्चों के साथ ही तो खेल रहा है। वही काम वो जो बाहर पार्क में जाके करता है चोर पुलिस खेलने का, वही वो इस पे खेल रहा है, वर्चुअली खेल रहा है। वो सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसी तरह उसी एंग्जाइटी के साथ वो खेल रहे हैं कि अभी पकड़ लिया चोर को और अभी पकड़ लिया, दिस इज व्हाट दे हैव एक्चुअली, और सब साथ में उनके पास वर्चुअल पावर्स भी हैं, सुपर नेचुरल चीजें हैं क्रिएट करने के लिए, और सो दे आर टोटली इनटू अ ब्यूटीफुल सरप्राइजिंग लेवल ऑफ वर्ल्ड, जिससे उनके हॉर्मोन्स उनको एक थ्रस्ट देते हैं, एड्रेनलिन सिक्रीट होती है और वो एंजॉय कर रहे हैं। लेट देम एंजॉय, दैट्स व्हाट द चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट। हम उनको लोनर्स क्यों बनाना चाहते हैं? अगर मेरा बच्चा स्वयं दो चार और बच्चों से कनेक्ट करने का माध्यम ढूंढ ले रहा है, और उस पे, क्योंकि हम नहीं सिखाते बच्चों को कि बेटा वर्चुअली गेम ऐसे खेलो और ऐसे करके ऐसे दोस्त बनाओ, दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे भेजो, ऐसे खेलो, उन्होंने अपने आप जरिए ढूंढ लिए। अगर उनमें इतनी क्षमता और कैपेबिलिटी है मींस टू एन एंड ढूंढने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, बड़े और एडल्ट्स परेशान है, बैठे हैं कि अरे यार हम तो घर के अंदर बंद हो गए, बच्चों ने अपने तरीके इजाद कर लिए, रास्ते ढूंढ लिए सोशलाइज करने के, मिलने जुलने के, नॉर्मल जीवन बिताने के, and they are more faster than us in adapting to this new normal. Let them be. I've seen parents and mothers getting restless within 20 minutes of the child started playing. यार अब तो उसका एड्रेनलिन निकलना शुरू हुआ है, अब उसकी एक्साइटमेंट शुरू हुई है, अब वो गेम के टोटल बीचों बीच है। जैसे अगर बच्चा हाइड एंड सीक खेल रहा है और 15-20 मिनट जैसे उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा और गेम अपने पीक पे जाने लगा, अब हम उसको बोले चलो बेटा बंद करो। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो वी हैव टू बी रीजनेबल देयर एज वेल। तो हम 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद बच्चे को बोलते हैं चलो बेटा आप खेलना बंद करो, मेक सेंस, तब बच्चे को भी थोड़ा समझ आता है, हमको भी। जब हम अनरीजनेबल डिमांड्स करते हैं तो बच्चे के अंदर रिएक्टेंस पैदा होता है, यानी टेंडेंसी टू रेजिस्ट द डिमांड ऑफ द पेरेंट, तो वो नहीं बंद करेगा, तो और खेलेगा और खेलेगा। एंड द पेरेंट चिल्ड्रन एंड अप सेइंग मैं तो जब भी खेलता हूँ ये तभी बोल देते हैं बंद कर, ये तभी कहते हैं गलत है, इसीलिए फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए फिर मैं या तो इनसे इरिटेट होकर बात करता हूँ या फिर मैं गेम बंद ही नहीं करता, सो वो रिएक्टेंस, वो इम्पल्सिविटी हम बच्चों को दे रहे हैं, so we really need to understand, when I am a counselor I really need to understand मुझे कहाँ तक बच्चे को समझाना है और कहाँ पेरेंट्स को समझाना है। So it's not always the child who always needs to be, बच्चे को कम समझाना होता है यूजुअली, उसके एनवायरनमेंट को ज्यादा कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है ना। बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसी के कमरे में टीवी भी है, उसके कमरे में गैजेट्स भी हैं, उसके कमरे में सब बैठ के बातें भी कर रहे हैं, और कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, तो हम मानते हैं कि एनवायरनमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करा जाए, ठीक है, उसके कमरे में कम स्टिमुलेशन दिया जाए, जब वो पढ़ रहा है उस टाइम पे एडजेसेंट रूम में प्रेफरेबली जोर से टीवी चला के कोई ना बैठा हो, भाई बहन को भी उस समय थोड़ा पढ़ने को कहा जाए। एक भाई बहन को तो खेलना अलाउ करा जा रहा है क्योंकि वो छोटा है, और एक को एक्सपेक्ट किया जा रहा है तुम सिर्फ पढ़ो पढ़ो, वो भी नहीं, बच्चों को रहता ना, वो तो नहीं पढ़ रहा, उसे तो नहीं कोई कह रहा है, सो लॉट्स ऑफ दीज इश्यूज वी एक्चुअली एंड अप क्रिएटिंग, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एज अ काउंसलर कि कहाँ कितनी काउंसलिंग करनी है। स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलर क्वालिटीज, इस पे हम थोड़ी बात कर ही रहे थे। बिल्डिंग ट्रस्ट, अब ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं? हम कहते हैं ना ट्रस्ट बिल्ड करो, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाइए और उसे एक्सप्रेस भी करिए, बताइए कि हम कॉन्फिडेंशियली बात कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट कॉन्फिडेंशियल है, द रूम शुड हैव अ डोर टू शट, द पीपल आउटसाइड शुड नॉट बी एबल टू सी कि आप रो रहे हो अंदर कमरे में बात करते समय, या हंस रहे हो, या कितनी बात कर रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स being able to take the perspective of the client, हर वो समस्या और सिचुएशन से मुझे स्वयं जीवन में गुजरने की जरूरत नहीं है उसे महसूस करने के लिए। ऐसा नहीं है, अगर मैं एज अ काउंसलर हूँ, मेरी मदर 23 years of age में, I have not lost my mother at the age of 23, my mother is still alive, so I'm not able to understand what would be the trauma of a girl who's lost her mother at 23, और या फिर मुझे वो एकदम बेचारी लगने लगे। Anyway, everyone has to go through the parental loss, किसी को जल्दी किसी को बाद में, मुझे सिंपथाइज नहीं करना है उसके साथ एज अ काउंसलर, या फिर हर वो परिस्थिति जिससे मैं नहीं गुजरी या गुजरा, दैट डजंट मीन एट ऑल
that I am not able to take the perspective of the individual. हमें सिर्फ ये सोचना है अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए इमोट नहीं करना है. दैट इज व्हाट एम्पैथी इज ऑल अबाउट. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो मैं आपसे रिस्पेक्टफुली, रिगार्डफुली बात करूंगा या करूंगी. आप बच्चे हैं तो नहीं करेंगे. टीनेजर है तो गड़बड़ ही होंगे. तो माई I will not hold any genuine regard in my heart. If you are high positioned, if you are from a high socioeconomic strata, so, there are a lot of different social determining factors जिसके आधार पर हम किसी को पॉजिटिव रिगार्ड हो सकता है ना शो कर पा रहे हो. अनकंडीशनल होना चाहिए. आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आ रहे हैं, आप कितने भी उम्र के हैं, मैं आपसे उसी रिस्पेक्टफुली और उसी प्रोफेशनलिज्म से, सीरियसनेस के साथ आपको अटेंड करूंगी और आपसे बात करूंगी. देन ओनली मीनिंगफुल counseling is possible. So when you're dealing with children as clients, so of course they are, हम ये मान के चले कि उनके पास हमसे कम समझ है, हम तो टीचर हैं, हम ही उनको समझा सकते हैं. तो कभी कभी ये चीज हमारे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में इंटरफेयर कर सकती है. राइट. And genuineness, one has to be really genuine in the sense that मुझे बच्चे की हर बात में गलत सही सब पे हाँ में हाँ नहीं मिलाना है. Although I may nod to whatever he or she is saying, I may end up saying I can completely understand what you're saying, what you're feeling. I know it must have been difficult. I know this is very challenging to deal with, but now is the time to move on. आई वुड से कि जरूरत हो तो हमें इस तरह की समय के साथ इस तरह की परिस्थिति से बाहर आगे मूव ऑन करना चाहिए. तो इसका मतलब है क्लाइंट को ये समझ में आ गया कि आप समझ तो रहे हैं उन्हें, लेकिन आप अभी उनके मैल अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न से, उनके एंजाइटी और डिप्रेसिव लाइफस्टाइल से एग्री नहीं करते हैं. अब आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें. दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड. राइट. So empathy के बारे में we've already discussed. It's about perspective taking. ठीक है. This again about empathy. You can go through these slides. There should also be willingness to listen on the part of the client, of the counselor. Again, what I've already talked about, there should be minimal distraction and there should be more of active listening, patiently. This is not send time. It's spelling error. It's spend time, right? Sorry. So you can make corrections to that, or I'll correct it. Do not hurry. Try to understand by taking the perspective of the child or client. Keep it serious and professional. Never end listening with a judgmental statement or a quick advice for solution. Assure help and support as an ongoing process. Unconditional positive regard, genuineness. Regulation of affect is also very important. Counselor should be able to regulate his affect appropriate to the client situation and therapeutic demands. मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, the moment I am sitting to counsel somebody, I should sound as someone very integrated and composed. ऐसा नहीं है कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले किसी से डिफरेंस इन ओपिनियन हुए हो तो मेरे मूड स्टेट में, मेरे इमोशनैलिटी में, और मैं अपने इमोशंस को आगे प्रोजेक्ट करूं अपने क्लाइंट पर. राइट. Some non-helpful behaviors. There are several lists of non-helpful behaviors. Most common thing that include is again जो हमने पहले बात कर ली थी, advice giving, lecturing, excessive questioning, storytelling, asking why, asking how did that and all that can be avoided. बहुत ज़्यादा उस तरह से over impinging of questioning is not going to be helpful. If you allow the client to provide narratives, बच्चे को स्वयं भी कुछ कुछ बोलने दे, बताने दे, that is likely to be of greater help. Right. Okay. You need to take a lead also. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कम बोल रहा है, तब आपको लीड्स लेने पड़ते हैं, आपको कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सवाल करने पड़ते हैं. That may also be required depending completely on the temperament of the child as a client. और लगातार बोलना है, सवाल करना है, जरूरी नहीं. Moments of silence, acceptance, paraphrasing is also very useful. That can also be used while you do counseling. Be aware of how you lead and where you are going, and you are working on the client's issues, not your issues, or what you think the child should be working on. So ये बात हमेशा से ध्यान रखनी है बहुत क्लैरिटी से. आप क्लाइंट को या बच्चे को उसके लाइफ कॉन्टेक्स्ट में देखो. आप उसके इश्यूज डील कर रहे हो, आप अपने इश्यूज नहीं डील कर रहे हो.
तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की इंटरप्रिटेशन उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे नहीं डालिए। ये आप कॉमन लाइफ सिचुएशन में आप ये बहुत अक्सर देखेंगे कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस सिर्फ उतने तक सीमित होता है जो उनके जीवन में घटा होता है। किसी और के जीवन में कुछ घटा है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो रहा हो सकता है। राइट। रीस्टेटमेंट ऑफ कंटेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स। अच्छा मैं समझ सकती हूँ इसके बाद आपको काफी दुख पहुंचा होगा या अच्छा आपको बुरा लगा, you felt very hurt. These kinds of reflection about their feelings, emotions, or are you trying to say that it was very disappointing? इस तरह के restatement and reflections and paraphrases can always be used. Encouraging words. So many times when I'm working with small children and when they are leaving, I use the phrase good girl, good boy. This is so boosting for a child जो बहुत सारा criticism face करके आया होता है। आधे लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर ब्लेम्स लग रहे हैं, यही बच्चा सबसे शैतान है, यही पढ़ता नहीं, काम करता है। आप अच्छे से उसकी सारी बात सुने, सारी परेशानियां सुने उसके कंटेक्स्ट में, एंड देन यू टेल कि चलिए ठीक है अब हम इस पे कुछ करेंगे, हम मिल के करेंगे, we'll together plan out something. Could you please try some of these small 2-3 things that I'm telling you today? Okay, fine. The person says, "अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगा." So nice, so wonderful. I really like your spirit. Good girl, good boy. That really works so hard, and that's immediately, instantly brings a broad smile on the face of a dull child, right? So encouragement and support is very important. Therapeutic silence is also very useful. थोड़ी देर आप खामोश भी रह सकते हैं, 2 मिनट का जनरल साइलेंस भी रह सकता है, जब बच्चा भी चुप है, आप भी चुप है, आप वेट कर रहे हैं for the child to speak. There's nothing to feel, uncanny or, discomforting while the session. Okay, you can look upon some of these things. Self disclosure is something also very important. आप अपनी personal life के कुछ objective examples कभी कभी use कर सकते हैं, right? And that is sometimes helpful, but not too much of revelation of one's own. You should not avoid divulging too much of personal information. Let the client know you as a counselor. As a teacher, even as a teacher counselor, you should provide less of personal information. One or two few personal disclosures are useful at times. जब हम अपना example देके motivate करते हैं या बताते हैं कि मुझे similar तरह का कुछ problem आया था थोड़ा सा, but I dealt with it like this. That's motivating for the child, right? Humor can also be used. Excuse me. It's not that if you're saying that the session has to be a serious one, it doesn't mean that there cannot be no witty jokes, no witty statements, no, some kind of general stimulating, smiling statements can always be used. That can be humorous, that can bring a smile on the face of the client, the child. Confrontation. Now, this is not skill, but putting the child down for doing something wrong. Now, this is what we say confrontation. This is an invitation to the child to look more closely at behavior that is not working or interfering with growth, change, or healthy functioning. Okay. So confrontation is more like a challenge. So यूजुअली काउंसलिंग में लोग कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति ऐसी होती है जब हमें बच्चे को कॉन्फ्रंट करना पड़ता है, यानी हमें पूछना पड़ता है। बच्चे से हमने पूछा बेटा आपने चोरी की थी क्या? बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं करी थी। अच्छा उस इंस्टेंस में फिर क्या हुआ था? उसने अपना कुछ नैरेटिव दिया। देन वी एक्चुअली एंड अप टेलिंग द चाइल्ड सम टाइम, अच्छा फिर वो आपके बैग में कैसे मिला, वो सामान कैसे मिला, है ना? तो कभी धीरे धीरे बात करते करते उस बच्चे को रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर इस एक्सेप्टेंस की तरफ जाना पड़ता है कि नहीं हाँ मुझे उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है। तो कभी कभी कन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड हो जाता है, बट वी डू इट इन अ ब्यूटिफुल वे, वी डू इट इन अ गुड वे, डिमीनिंग वे में नहीं। वी कैन ऑलवेज टेल द चाइल्ड कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं। इवन व्हेन आई डू एन इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हेन वी बिगिन डूइंग अ टेस्ट लाइक मलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, वी बिगिन द इंफॉर्मेशन सब टेस्ट जब करना शुरू करते हैं तो हम तुरंत बोलते हैं अभी हम आपसे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड बातें पूछने जा रहे हैं, उसमें से जो आपको आती हो आप उसका जवाब दीजिएगा, जो नहीं आती हो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट नो मैम आई डोंट नो दिस, क्योंकि सब बच्चों को तो सब बातें नहीं पता हो सकती है ना, कुछ बातें पता होंगी आपको, कुछ बातें हो सकता है ना भी पता हो। That's just okay, you just have to say that ma'am ये नहीं मुझे आता। That is something that's going to
make the child comfortable and not build up anxiety about everything that he's not being able to answer. Every second thing जो उसको नहीं जवाब देनी आई, उसके लिए उसको एंग्जाइटी होने लगेगी, उसको लगेगा सारे बच्चे दे देते होंगे, शायद मैं नहीं दे पा रहा हूँ, right? So before you confront someone, you want to make sure the relationship is strong and able to withstand the challenge of the confrontation. इसका मतलब clearly कि confrontation कभी भी हम पहले सेशन में नहीं कर सकते, दूसरे में भी नहीं, तीसरे चौथे में आगे जाके हम प्लान कर सकते हैं, जब हमें लगे रैपो अच्छी तरह फॉर्म हो चुका है बच्चे से और अब हम उसको कुछ चीज के लिए थोड़ा कॉन्फ्रंट कर सकते हैं, राइट? Rationalization, rationalization involves challenging irrational and dysfunctional thoughts and perceptions of the client and restructuring them to formulate more logical and functional perceptions. तो rationalization का अर्थ होता है जो भी व्यक्ति के illogical या dysfunctional thoughts हैं, उससे हम उसको बाहर निकाल के एक structured thinking process की तरफ लेके जाते हैं, राइट? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी लाइफ में ये ट्रॉमा हुआ या ये इंसिडेंट घटा या ये चीज बुरी हुई, सो समय के साथ पहले हुई कभी पास्ट में और अभी तक वो कुछ सिम्टम्स उससे एसोसिएटेड डिसफंक्शनल शो करता है, तो सारी बात सुनने के बाद, इमोट करने के बाद, एम्पथाइज करके समझने के बाद, सब कुछ के बाद, we eventually need to bring to the client this very fact to show that it is irrational to still continue to be dysfunctional because something like that happened in the past, right? तो पूरे विचार को, स्कीमा को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है और ये महसूस करवाना पड़ता है कि इट इज पॉसिबल एंड इट हैपेंस with most individuals that some negative experiences pass through their lives. नेचर उसका बदल सकता है लेकिन इफेक्ट उसका वही होता है, इम्पैक्ट वही होता है, राइट? तो उसके बाद हम उसके साथ नहीं जीने लगते, हम उसको एक मेमोरी की तरह, पास्ट एक्सपीरियंसेस की तरह पीछे छोड़ के आगे फंक्शनल होते हैं, राइट? स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग तो आपको बता ही दिया हमने, इनिशियल सेशन है, वर्किंग अप फेज है, टर्मिनेशन और फॉलोअप भी हम करते हैं, राइट? तो ये सब आप देख सकते हैं जनरली। सो वर्किंग अप फेजेस में आप रिफ्लेक्शंस देते हैं, समराइज करते रहते हैं फीलिंग्स की, रैशनलाइज करते हैं। और ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू सिट फॉर काउंसलिंग। तो कई बारी क्लाइंट को यानी अपने रिप्रेस्ड इमोशंस, एंगर के, इरिटेशन के, वो हो सकता है थेरेपिस्ट के साथ बात करने में बाहर निकलने लगे। और कभी कभी काउंसलर को, कभी कभी हम वी फील, यानी इस तरह के क्लाइंट्स, आई हैव हैड एक्सपीरियंस समवन लाइक दिस इन माय पर्सनल लाइफ। तो जैसे ये क्लाइंट आया और इसने ये सारी बातें शुरू करी, मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि इस तरह की चीज तो मैंने उस व्यक्ति के साथ पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी थी। वो इस तरह की बातें करते हैं, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। नो, बट देन व्हेन यू आर सिटिंग एज अ काउंसलर, तो हम उस भावना को, उस फीलिंग को काउंटर ट्रांसफर नहीं करेंगे, यानी अपनी फीलिंग्स को, अपने नेगेटिव रिप्रेस फीलिंग्स को, क्योंकि मेरे क्लाइंट में आज इस समय मुझे वो क्वालिटीज दिख रही हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वो नेगेटिव इमोशंस नहीं जनरेट करके उसको रिस्पॉन्ड करूं या कर सकता हूँ। ऑल्दो दीज आर वेरी डीपर कॉन्सेप्ट्स, you really need not go much deep into it because as a teacher counselor you may not be traversing into very deep level of counseling practices, but you need to understand, these are also, this may also happen with you on certain occasions कि किसी क्लाइंट से आप नहीं रिलेट कर पा रहे हो, आपको बार बार उससे मिलने के बाद, उस बच्चे से मिलने पर, बात करने पर, उसकी प्रॉब्लम सुनने पर उलझन होती है, नहीं रिलेट करते हो, नहीं समझ आ रही बात, बहुत कब पॉसिबल है, हो सकता है। या बच्चे को ट्रांसफरेंस हो रहा है तो उसको बहुत डिपेंडेंस हो गया है अपने काउंसलर टीचर पर, तो जो भी चीज है वो बताएं, वो करें, तो हमें अपनी काउंसलिंग को इस हिसाब से प्रोसीड करना होता है दैट इट डज नॉट एंड अप बिकमिंग अ डिपेंडेंट रिलेशनशिप, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं सेशंस को प्रोफेशनली डील करना होता है, यानी सेशंस को टाइमली भी एंड करना होता है और प्रोसेस ऑफ थेरेपी को भी टाइमली टर्मिनेट करना होता है। होमवर्क असाइनमेंट्स देने होते हैं, यानी कुछ ना कुछ टास्क, एक्टिविटीज, टारगेट बिहेवियर्स, आप ये कोशिश करिए, ये चीज करनी है, बिहेवियरल चेंज को जनरेट करने के लिए भी हम बताते हैं, so that self accountability of the client and the child also plays a role, not that the counseling is all about coming, sitting, talking and going, right? So it's not about becoming an agony aunt, right? So these are some of the important concerns. Follow up sessions are always very important. काफी हद तक समस्या सॉल्व होने के बाद भी हम धीरे धीरे कुछ फॉलो अप सेशंस मेंटेन कर सकते हैं जो मोर स्पेस्ड अप इन टाइम हो सकते हैं, शॉर्ट इन ड्यूरेशन हो सकते हैं। यानी अब आप 1 महीने के बाद आना, एक बार मुझे रिपोर्ट करना चीजें कैसी चल रही हैं,
2 महीने के बाद बता देना एक बारी, थोड़ा सा बीच बीच में मिलते रहना, बीच बीच में थोड़ी सी बात करते रहना, दैट इज नोन एज अ फॉलो अप सेशन एंड मेंटेनिंग अ कनेक्ट। और कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, कुछ चीजों में, क्लाइंट्स में काफी सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए वी नीड टू रेफर देम। इफ अ क्लाइंट हैज सर्टेन स्पेसिफिक सीरियस इमोशनल मेंटल हेल्थ कंसर्न्स विच आर रेड फ्लैग्स लाइक दिस, सुसाइडल थॉट्स है, कभी आपको बात करके बच्चे के साथ महसूस हुआ, बहुत ज्यादा होपलेसनेस है, देन यू इमीडिएटली नीड टू रेफर द चाइल्ड फॉर अ टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर हेल्प। होमिसाइडल थॉट्स, वायलेंट हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को मारने की थॉट्स, विचार या भावनाएं पैदा हो रही हैं, राइट। एक्सट्रीम मूड शिफ्ट्स होते हैं अगर उसके, इरेशनल बिहेवियर है, लैक ऑफ जजमेंट है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, सेल्फ हार्म है, रिस्ट कटिंग है, ठीक है, आपने निशान देखे, आपको रेफर करना पड़ेगा। ऑड बिहेवियर है, स्पीच पैटर्न्स वियर्ड है, बहुत पुअर पर्सनल हाइजीन दिख रहा है, एक्सट्रीम चेंजेस इन स्लीपिंग, एपेटाइट एंड वेट है, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट बहुत अधिक हो रहा है, ज्यादा या रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है, एक्सेसिव सब्सटेंस यूज हो रहा है, या इंटरनेट यूज या गैम्बलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हो रही है, देन वी नीड टू रियली sorry excuse me, then we really need to take that into consideration। family issues हैं जो severe है, grave enough है, that then as a teacher you need not really get too much into it, then you can better refer the child to a professional for help। social isolation कर रहा है बच्चा, बिल्कुल किसी से मिलजुल नहीं रहा है, recent कोई major loss उसने experience करा है, relationship issues severe रहे हैं उसके, consistent poor academic functioning में inconsistency है, हाँ सॉरी, कंसिस्टेंटली पुअर होती जा रही है एकेडमिक फंक्शनिंग, then also you need to send the client for a professional help to identify whether it's a learning disability, emotional disorder। Now before I end, I'll just mention you about a particular case I recently saw। और भी कई cases इस तरह के हम देखते हैं। There's a girl who walked in and she very vividly explains, 16-year-old studying in 10th grade। What I'm trying to emphasize here is that the teacher certainly may not be aware कि वो बच्चे को, वो बच्ची इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है। She vividly explains about 4 people who are there around her all the time। एक लड़की है जो अर्ली 20s में है, जो हर वक्त मुझे क्रिटिसाइज करती रहती है, मैं ड्राइंग करती हूँ तो बोलती है तुमने बहुत खराब ड्राइंग करी है, मैं पढ़ती हूँ तो बोलती है तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमने वो नहीं काम ठीक करा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। देर इज अ बॉय इन माई हाउस who's 30+ years of age, ओल्ड एज ग्रुप का वो है, उसके चेहरे पे हमेशा मास्क रहता है और वो ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहने रहता है और ब्लैक कलर की हेड है, हैट है। आई ओनली सीन हिज आईज, ही ऑलवेज कैरीज अ नाइफ एंड ही वांट्स टू मर्डर मी। एक बच्चा है 10 साल का, कभी मुझे लगता है वो उन लोगों के साथ है, कभी मुझे लगता है वो शायद मुझसे मदद मांग रहा है। और एक ओल्ड लेडी है जो हमेशा व्हील चेयर पे रहती है, उसका चेहरा हमेशा उसके बालों से ढका रहता है और वो न्यूज पढ़ती रहती है अक्सर लोगों के मर्डर्स और डेथ्स के बारे में। ये 4 लोग मेरे घर में हैं जो मुझे परेशान करते हैं, particularly that young girl who is in her early 20s and the father, sorry, the other man, you know। और I don't know them who they are, but they are around me, मुझे अक्सर दिखते हैं। They are not my family, of course, because the family constitutes a brother and the 2 parents। And she also has something to say about a childhood experience of molestation that happened, and she reacted to it eventually later, and she wanted her mother to respond to that, but उसमें कुछ बहुत हुआ नहीं because family member involved थे, तो mother said कि we can't say anything। और वो लड़की कह रही थी मैं ना पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ाई अब अच्छे से हो नहीं रही है, मेरे ग्रेड्स फॉल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल एंड दिस ट्रॉमा। और आजकल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आती है कि मैं एक नाइफ उठाऊं और जाके अपने फादर को स्टैप कर दूं। Now, this is a very pleasant looking girl, very nice, polite talking, pleasant looking girl. She's talking all nice stuff. And उसने ये बातें किसी को नहीं बताई हैं except one of her cousins. And excuse me, little bit to her brother. And then she comes to the mental health professional and she's finally sharing it। उसके हिसाब से उसके फादर को तो खैर पता भी नहीं है कि उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ना ही वो सोचते हैं कि उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। Mother knows that she is visiting
So what I mean to say is that आपके इर्द गिर्द आपके एज अ स्टूडेंट क्लास में एक बच्चा पढ़ता हो सकता है जो इतना सीरियस ग्रेव मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा हो, साइकोसिस हो सकता हो उसको, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो सकता हो उसको, लेकिन हमें नहीं पता होता, बच्चा नहीं बताता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में, उसकी परफॉर्मेंस में चीजें दिख रही होती हैं. सो जब भी हम क्रिटिकल हो, we really need to understand there's something back behind in the personal life and the personal world of the client as well. We really need, we may not be able to explore it, we may not be able to kind of help the client about it, but हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हर एक दूसरा व्यक्ति, एक बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है, अ, वो एक लाइफ कॉन्टेक्स्ट है उसका, उसका एक पर्सनल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम उसकी चीजों के क्या कारण हो सकते हैं. So should I be patient with this person? Should I try to help out in some way? Should be my attempt, but if I'm able to help out in some way, it's good, fine. Otherwise, you know, these kinds of cases are also there. There's yet another girl, उसके parents they went through a divorce. उसी दौरान में उसको भी कुछ आवाजें सुनाई देना, लोग दिखाई देना, और someone she also started complaining कि एक फीमेल है मेरे घर में जो एक नाइफ लेके घूमती है, एक आदमी वो मेरे साथ बेड पे सोती है, those kinds of spooky things. You if you have ever seen movies on psychosis and all, you may find that these are some of those very classical pictures that you would see. But वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, both these girls are in 10th grades, वो अपने टेस्ट भी दे रहे हैं, असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, पर टीचर्स को नहीं पता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज दैट आपके क्लासरूम में आने वाले बच्चों को अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज की तरह सामने नहीं दिखते हैं, जिनके बारे में वो शायद आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, या अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहेंगे. So just by looking at a person, do not assume that everything must be fine with this person. There must be so much happening behind the scene, right? So a small interjection to show that we listen, or to encourage someone to continue talking or to ask questions that help further clarify their issues. Just listening and allowing someone to tell their story will already help getting half of it done, as the person feels understood, significant, and accepted amidst all rejections and despise that one has to go through. So a child is going to remember who was there, not what you spent on them. Kids outgrow a toy and outfit, but they never outgrow time and love. Thank you. Any questions? Yes, thank you so much, ma'am. Ma'am, hope I'm audible. Yeah, yeah. Okay, okay. Ma'am, Ajit has posted one message, one question that how far we can mold the environment of the child, as we know that it's hard to convince parents compared with the students due to the age and the strong belief system. So how can we involve parents to that extent? Yes. So would you just, I'm so sorry, would you just repeat the question? Ma'am, Ajit has asked that how Mhm. far we can mold the environment of the child, as we know that it's hard to convince parents compared with the students due to the age and strong belief system. So how can we involve parents to that extent? Yeah. Uh, yes, it's a very important, relevant concern. Uh, Involving parents to an extent is okay when you are, see, it completely depends on what is the nature of problem. If it's purely the academics and the academic difficulty, child is not doing so well, you can intermittently bring that to the notice of the parent. बट ये जीवन में बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छा करे अकेडमिकली, बहुत बढ़िया ही करे, तभी वो एक एफर्वेसेंट फ्यूचर अपने लिए क्रिएट कर सकता है. कभी कभी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अपने आप स्वतः उम्र के साथ आती है, और उसके बाद ही ये डिटर्मिन होता है कि व्यक्ति मैं कितना पढ़ने वाला हूँ. कुछ बच्चे होते हैं कैलोस रहते हैं, 7th 8th तक भी रहते हैं, 9th 10th तक आते आते सडनली बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. कुछ बच्चे शुरू से ही बहुत अकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो वी रियली नीड टू अप्रिशिएट दोज डिफरेंसेस इन दी लाइफस्टाइल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. और बहुत देर से जागे हुए बच्चे जो होते हैं, बहुत देर से वो रिस्पॉन्सिबल हुए, दे somehow do equally well or sometimes even better in their lives than the careers and professions later eventually in their lives, in their careers as well. So ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. तो as far as pure academic concerns are concerned, बच्चे का कोई major behavioral issue नहीं है.
आप intermittently parents को knowledge में ला सकते हैं, but need not bring up too much pressures. I tell teachers these days, teachers of my children as well, when they have not finished their assignments or not done something, and they keep on messaging me and calling me कि मैम उसका ये जमा नहीं हुआ, मैम उसका ये नहीं हुआ, तो मैं उनको encourage करती हूँ, मैम आप जीरो दे दो ना. Let them face and encounter failures. हम उनको फेलियर से इतना ज्यादा बचा ले रहे हैं ना, academic systems भी, मतलब teacher herself is not responsible, the educational system, the system is such way responsible कि हम बच्चों को इतना शील्ड कर रहे हैं from failures. कहीं गलती से इसको फेलियर ना मिल जाए, कहीं गलती से इसको ऐसा ना हो कि इसको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए ऑफ जीरो, गेटिंग जीरो. टीचर इज मोर स्कैर्ड देन द पेरेंट्स और द स्टूडेंट हिमसेल्फ. ठीक है, तो जब तक हम फेलियर फेस नहीं करते हैं, तो वो हमको उसका स्वाद नहीं मिलता है ना, तब तक हमें समझ नहीं आता है कि व्हाट इट मीन्स टू वर्क हार्ड, व्हाट इट मीन्स टू बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स, गुड एक्कोलेट्स. तो ये सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट तब होती हैं, मायने तब रखती हैं जब हम फेलियर से ही गुजरते हैं. राइट. तो होने दीजिए. अगर बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, then in those cases certainly parents can be involved, we can involve parents. और उसके बारे में आप पेरेंट्स को बुला के आराम से धैर्य से बातचीत कर सकते हैं. बिलीव है कि हम एक लेटर डाल दें या मैसेज डाल दें प्रॉब्लम को लेकर के और उसी से सब सॉल्व हो जाएगा, तो वो नहीं होता. और एक बारी बात करके चीजें सॉल्व हो जाएंगी तो नहीं होती. एज आई सेड, पेरेंट्स आल्सो नीड टू बी काउंसल्ड. काउंसलिंग तो हमेशा एक प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है. वी नीड टू गो थ्रू इट इन स्टेप बाय प्रोसेस. तो पेरेंट्स से भी पहले रैपो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से में लेना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा. देन वी विल लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट. राइट. Yes, thank you so much, ma'am, for this valuable session, ma'am. You have very nicely explained the process of counseling, ma'am, and you very rightly said that the teacher's job is not merely related with the teaching only. Nowadays, there are some situations where they need to counsel the student. So you very well explained the process of counseling. And thank you so much on behalf of Training and Placement Cell, ma'am. I want to convey my deep regards and sincere thanks to you for your valuable time, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks. It was my pleasure. Thank you. Thank you, students. Thank So you all for your Pratibha ma'am, patience. thank you Yes. so much Oh, for ma'am. joining us. Maybe Thank Jyoti you, ma'am ma'am. thought that I'm not. I was there in the meeting and I have Okay. attended your complete session today. Ma'am, I'm Okay. really very sorry. I was checking you in No, the that list is of fine. That is participants. fine. That I'm is so sorry, perfectly ma'am. fine. No, there is no need to feel sorry, Jyoti ma'am. Actually, I only asked you that you please go ahead with your session and I shall join in between. There was one class of mine, but I was there in the session and Pratibha ma'am, I have attended this complete session today. And the way you deliberated all the aspects of mental health and then how to deal with the students in the classroom, being the parents, and everything was, I must say that was very impressive and that was very deliberative. Thank you so Thank much you for so much, sparing your ma'am. valuable time with us and and for showering your blessings on our students. Thank you so much. Thank you so And much, ma'am. I'm I glad. And want my students to take up these things in their life. Do not keep these personality development sessions just for attending and just for listening. You have to take out some tips from these sessions. Only then these sessions will be successful. With this note, thank you once again, ma'am. And that was Thank you so such a wonderful session. All the best to all the students. thank you so much, ma'am. My best wishes to Army Institute of Education. Thanks a lot. Thank you, Thank you ma'am. so much. Thank you, Jyoti, ma'am. Yes, Thank you so thank you, much, ma'am. Shubham. Thank you, ma'am. And thank you, Thank Jyoti. you. Thank you, Shubham, students. you can conclude the meeting, beta. Thank you so much. Jyoti. Thank you so much.